It is an occupier that does not listen to anyone, that does not pay heed to any advice, even from its friends, if there are any left. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मारखोर एनालिसिस के तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के जो मंदूब आसम हैं, उन्होंने आज इसराइल की ऐसी कुत्तों वाली की है और इसराइल के मंदूब को सामने बिठाकर उसकी ऐसी शतरोल की है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अक़वाम मुत्तहिदा के इस अदारे में किसी ने भी इसराइल की ऐसी नहीं की होगी। उन्होंने फ़लस्तीन के इशू से लेकर कतर के ऊपर जो इन्होंने हमला किया है उसके तक का इनको जवाब दिया है, और ऐसा जवाब दिया है कि पूरा जो वहां पर दूसरे मुल्कों के लोग बैठे थे वो भी खुश हो गए, और पाकिस्तान के लोगों को उन्होंने फख्र से उनका सर बुलंद कर दिया है। तो दरअसल में इनके वजीर आज़म नेतन्याहू ने अपनी जो कतर के ऊपर इन्होंने कार्रवाई की है उसको जस्टिफाई करने के लिए उसने ये बयान दिया था कि पाकिस्तान के ऊपर जैसे अमेरिका ने कार्रवाई की थी अल-कायदा के सरबराह उसामा बिन लादेन के खिलाफ, इसी तरह हमने दहशतगर्दों को निशाना बनाया है कतर में हमास के जो लोग थे उसी नोयत की कार्रवाई करते हुए। तो इसके ऊपर भी पाकिस्तान ने जवाब दिया है इसराइल के मंदूब को, और ऐसी कुत्तों वाली मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपने पहले नहीं सुनी होगी कि एक मंच के ऊपर ऐसे सामने बिठाकर किसी ने इतनी इसराइल की कुत्तों वाली की हो। तो इसराइल के मंदूब के चेहरे के तासुरात आपने देखने हैं, और पाकिस्तान का जो बंदा जो इसकी कुत्तों वाली कर रहा है उसका कॉन्फिडेंस आपने देखना है। तो वीडियो मैं एंड के ऊपर लगा रहा हूं, आपने इस वीडियो को मुकम्मल देखना है और अपने पाकिस्तानी होने के ऊपर फख्र महसूस करना है कि सिर्फ आपका एक मुल्क पाकिस्तान ही है जो इसराइल को इस तरह जवाब दे सकता है। बाकी जो अरब रियासतें हैं उनका तो आपको हाल पता ही है कि क्या हो चुका है। कतर के ऊपर अभी वो मिसाइल मार के चले गए हैं, लेकिन अभी तक इनकी तरफ से कोई भी रद्द अमल नहीं आया। अगर यही इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ कोई ऐसी कार्रवाई की होती तो पाकिस्तान ने अभी तक इनका प्रोग्राम भी वाड़ चुका होना था, जिस तरह पाकिस्तान ने इंडिया का प्रोग्राम वाड़ा था। तो बाकी मैं आज पाकिस्तान के मंदूब की इस स्टेटमेंट का और पाकिस्तान के मंदूब ने जो अक़वाम मुत्तहिदा में जो बयान दिया है इसका मैं मजीद किरकिरा नहीं करना चाहता। सीधा मैं आपको इस बयान की तरफ लेके जा रहा हूं, और साथ में आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में बेल के आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। The representative of Pakistan has asked for the floor to make a further statement. I give them the floor. Thank you, Mr. President. I am obliged to take the floor to respond to some comments. The representative of Israel perhaps did not listen attentively to all council members and other speakers in today's debate. And in our view it is unacceptable, indeed ludicrous, for an aggressor, an occupier, a serial violator of UN Charter and international law, that is Israel, to abuse this chamber and disrespect the sanctity of this council, and this is not the first time. And by pointing fingers on others, baseless assertions primarily aimed at masking its own illegal actions and violations of international law. President, but that's not at all surprising. It is an occupier that does not listen to anyone, that does not pay heed to any advice, even from its friends, if there are any left, that refutes, and not just refutes, it threatens members of the international community, international media, international human rights and humanitarian organizations,
doesn't listen to the ICJ or the ICC and threatens the UN and its senior officials. And it does that with impunity, shielded by its apologists who time and again acquiesce in its illegal actions and defiance of the international community. And like all occupiers, despite being the aggressor, it feigns and plays the victim. But today it is totally exposed. President, this council has spent decades discussing the situation in the Middle East and the Palestinian question. Meeting after meeting, we devote hours to this agenda. It is not because of anyone else. It is because of Israel that refuses to vacate its illegal occupation and that blatantly violates the resolutions of this council. It's because of that we have these discussions. Israel also chose to refer to an unrelated incident and make misleading remarks regarding Pakistan in an effort to justify its own illegal actions and violations of international law. Pakistan's position on that incident has been clearly stated and is publicly available. The international community is well aware of Pakistan's frontline role and sacrifices in the international community's fight against terrorism. The entire world, including our partners, acknowledge that Al-Qaeda was largely decimated due to Pakistan's counter-terrorism efforts. And we remain committed in this global, collective endeavor. And we cannot accept insinuations from an irresponsible rogue state that is, in fact, the perpetrator of worst kind of state terrorism that we are witnessing in Gaza and, in fact, in the occupied Palestinian territories for decades. And we reject any false analogy, as has also been done by Qatar. For whatever way it interprets the statements in this council, the occupying power must go back and read carefully the statement issued by the Security Council today.